हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन है क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सौम्या शाक्या जी, जिनका अभी अभी आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन हुआ है। रिजल्ट अभी आया है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत खुशी हुई आप सब, आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको जानकर। आपके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ टू इंट्रोड्यूस यू। सौम्या जी ने यहाँ पर सेकेंड अटेम्प्ट में ये एग्जाम जो है वो क्रैक किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है। 2021 में ये पास आउट हैं। और एक अच्छी बात आप सभी के लिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से ये नहीं है, इन्होंने लाइफ साइंसेज से अपनी ग्रेजुएशन की है। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके क्वेश्चंस फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के जितने भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो सौम्या जी, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताना चाहेंगी, हालांकि मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। Yeah, so first of all, thank you so much for that introduction, ma'am. So, as you said, I have passed out in 2021 from Hansraj College, University of Delhi, from Life Sciences. And since then, in the last 2 years, I've also completed my post-graduation. After graduation only, I knew कि I want to work in the government sector, and वहाँ से फिर somehow RBI जितने भी given the perks and all of it, it became a natural choice for me, and I started my preparation. And as far as the background आप जो बोल रहे हैं, as far as that is concerned, I think it is also kind of a mental barrier, and it is important to overcome that. कि अरे मेरा ट्रू। बैकग्राउंड नहीं है या आई डू नॉट हैव द वर्क एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स बहुत सेकेंडरी होती हैं. दीज थिंग्स मैटर ओनली एट द इंटरव्यू स्टेज. फेज 1 फेज 2 में यू आर ऑल ऑन योर मेरिट. if you're not good at it, despite having the background, despite having the work experience, आप phase 1 भी, if you're not disciplined enough, आप phase 1 भी नहीं निकाल पाओगे. That is the level of the exam. So yeah, that is ट्रू। there. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस बैरियर कि बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लाइफ साइंसेज से हैं फिर भी उन्होंने ये क्रैक किया है। तो सौम्य जी, शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले फेज 1 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फेज 1 में हम प्रैक्टिस सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के साथ शुरू करते हैं। तो वो मुझे बताइए, कुछ स्टूडेंट्स का बहुत वीक होता है वो वाला सेक्शन और बहुत डरते हैं, तो उसकी कैसे आपने प्रिपरेशन की? सो या क्वांट एंड रीजनिंग थोड़ा तो लगता है, स्पेशली क्वांट. आई वाज मच मोर कंफर्टेबल विद रीजनिंग, बट देन आई मोस्टली यूज्ड ऑनलाइन सोर्सेस. पहले तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बिकॉज आई डिड नॉट हैव द बैकग्राउंड. तो बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप इफ यू डायरेक्टली गो ऑन टू द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, यू विल नॉट बी एबल टू लाइक डू देम इन द एग्जामिनेशन. तो बेसिक्स क्लियर करिए, उसके बाद जस्ट पिक कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए. इवन कैट की भी, आई फॉर क्वांट आई थिंक आई प्रिफर्ड अ बुक. इट वाज फॉर कैट, आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर एग्जैक्टली, but quant के लिए I did that. For reasoning, it was mostly online sources. If I talk about Adda, I think a year back there was a reasoning playlist by Saurabh sir, if I remember. For यस यस। reasoning, yes. So I used that because reasoning में कुछ concepts थे. There was syllogism and some concepts. थोड़ा उनमें confusion था. So last, which was my failed attempt in phase 1, I knew कि reasoning में कुछ improvement चाहिए. So I started looking for sources, and that playlist really helped me in various topics. Syllogism हो गया, ranks and orders, all these कुछ topics थे. So it helped me. So this was for quant and reasoning, and again practice and mock tests. You cannot like run away from them if you want to like master reasoning and quant, because those are of extreme importance. Quant में I would also say one thing कि काफी लोगों का sectional नहीं निकलता है. तो what I felt in the exam this time as well as last time, DI is something जो people maybe they don't prefer attempting DIs. But in both these years, at least in my experience, there has been one DI which has been doable in the exam. और अगर आप वो एक DI ही निकाल ले रहे हो तो 4-5 नंबर यू विल गेट इट फ्रॉम देयर. 4-5 नंबर लेवल ऑफ एग्जाम के हिसाब से बहुत है टू क्लियर द सेक्शनल. सो मे बी जस्ट फोकस ऑन DIs अ बिट मोर. तो थोड़ा सा स्मार्टली आई गेस मैं बोल सकती हूँ। और हाँ. एंड आई वांटेड टू ऐड कि इट वाज नॉट योर फेल्ड अटेम्प्ट। आई थिंक हम इसको एक बहुत बड़ी लर्निंग, या आपने बहुत कुछ अपने लर्न किया होगा, तब ये या सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत हेल्प। या सो वी वुड नॉट कॉल
failed attempt. Yeah, Okay, that so that is was for completely true. yeah. Now the most painful part, current affairs. Let's jump into that. एक Current affairs like एक ऐसी चीज है जो बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आती है, आपका ईएसआई एफएम और जीए तो है ही, एंड देन इंटरव्यू आल्सो। सो करंट हम्म अफेयर बहुत सारे एक पेन रहता है कि क्या करे, हम्म कैसे रिवाइज करे, कहाँ से करे, कितना करे। सो प्लीज हम्म टेल अस अबाउट दैट। Current affairs, I tell you, in this phase one examination, it was a pain. Sitting in that examination, I knew wo kya pressure tha us waqt, because the pattern changed just like that. There were no easy questions, no one-liners, no single word questions. We were just looking for it. कि अरे 10 क्वेश्चन हो गए अब आएगा, 20 क्वेश्चन हो गए अब आएगा. No, it was not there. I'll tell you, in my mocks with the normal level of मतलब जैसा पेपर आता है, I used to revisit every question because I have good reading speed. But in the exam, by the time the timer got off, I was able to reach the second last or the last question. I was not able to revisit any questions. The questions were so lengthy. Lengthy is one thing, they were difficult questions. They were not easy questions. All economics, all finance based. RBI notifications. सो जो नॉर्मल चीजें होती हैं, डेज, डेट्स, ऑथर्स, बुक्स, इनॉग्रेशंस हेयर एंड देयर, none of those things, कोई ऐसी चीज नहीं थी. And I also feel it is a step in the right direction also, because those are sort of redundant things. Maybe they don't add that much value to your understanding. So also it राइट will, राइट it is going to help in the integrated preparation of phase one and phase two, because now GA में तो at least there are not much we can like divergences between uh, general awareness part of it, I think. Because schemes पूछी जा रही हैं, reports पूछी जा रही हैं, and though that too like not peripheral aspects, deeper questions are asked. I remember there was one question on बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. There was not इस पे नहीं था कि एलिजिबिलिटी क्या है, या लॉन्च ईयर क्या है, या मिनिस्ट्री क्या है. द क्वेश्चन वाज कि ऑन द डेफिशिएंसी इन विच ऑफ द पैरामीटर्स लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम, एंड देयर वर सम ऑप्शंस, sex ratio, female literacy ratio, all these things. So the schemes have to be like read and understood in a very comprehensive manner. बहुत deep में जाके आपको उनको समझना पड़ेगा, उनकी मतलब you need to understand why they have been introduced, what has been the purpose, how successful it has been. Or of course there are so many schemes, but just keep your focus on the schemes which have been in news for the recent past, करेक्ट because those करेक्ट are already picked up and asked in the exam. Same with reports. Dig a little deep into them. Not just the ranks, the scores, the on the base. NIRF report was asked. उसमें indicators पूछे गए थे कि on which indicators, what are the different indicators on which this report is based. So these things are important now. ओके ओके, सो कंसेप्चुअल नॉलेज मस्ट बी देयर, अभी सिर्फ फैक्ट से नहीं काम चलेगा, concept should be clear, right? Yeah, exactly. Exactly. Also, how many months, like for how many months a person should, refer to the current affairs, for how many months? I think 4 months is enough, but very deep understanding of current affairs. Like 4 months भी अगर आप कर रहे हो तो RBI circulars, RBI notifications, schemes, reports, major economics, finance news, it should be in your mind. And बहुत ज्यादा time crunch है तो you can also go for 3 months, but then do it very well. Because चीजें जो Right. भी आ रही हैं, they have been asked from the very recent past, but again in a very deeper manner, in a very deeper sense they have been asked. Okay, okay. There is one question which students generally ask is कि क्या notes बनाने चाहिए, or we can just refer to some monthly magazine, or what? Should we make notes? It's a very, I think, personal thing how one wants to do it. If I talk about Okay. myself, yeah, Yeah. I didn't go for note making, at least for current affairs, because I felt it will take a lot of my time. And when option is there, when I do have those monthly compilations, those PDFs, I think it is better to make use of them. But then what I did, I'll go through them, I'll do them properly in the first reading. In the second reading, I would highlight a few points, that in the third reading, I don't have to waste my time on non-important things. So, Right, because right. that will help you in revision, because बाद में इतना सारा compile हो जाता है कि revision becomes very important but very difficult. तो वो जो आप पहला time invest
इन्वेस्ट करते हो ना, अगर आप एक पीडीएफ में 5 मिनट भी बचा पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट हाईलाइटिंग, दैट इज वर्थ इट इन द एंड, बिकॉज वहां पे फिर इतना सारा जब आप कवर कर रहे हो, सो यू नीड टू लाइक डू दिस लिटिल लिटिल थिंग्स टू सेव टाइम. Okay, so that's a very important point she highlighted, that revision is very important. And फर्स्ट रिवीजन में शायद टाइम लगेगा, बट देन ग्रेजुअली इफ यू हैव हाईलाइटेड द करेक्ट थिंग्स, तो वो ग्रेजुअली आपका टाइम डेफिनेटली कम कर देगा. एंड रिवीजन, यू कैन नॉट जस्ट स्किप रिवीजन, यू कैन नॉट जस्ट रीड एंड लीव इट, यू हैव टू रिवाइज a thing, a particular topic, I think 3 to 4 times. Yeah, like Depend on the time. At least 3 for to 4 times. schemes, I did schemes at least 4 to 5 times. कि schemes में I had a little issues because बहुत सारी schemes same area में होती हैं, तो confusion हो सकता है. So schemes में I invested a lot of time. Okay, so to summarize this, you can follow any monthly magazine. जैसा कि सौम्या जी ने बोला है कि कोई भी मंथली मैगजीन आप उठाइए, उसको 3 से 4 बार आपको अच्छे से, बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 8-9 महीने का पढ़ना है. इवन इफ यू आर रीडिंग फॉर 4 months, I guess, but you need to make sure that your concepts are being cleared. So ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है. So that was all for current affairs. सबसे ज्यादा पेनफुल पॉइंट, बट आई गेस मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ये डायनामिक है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. ओके ओके. सो सौम्या जी, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू आई थिंक मैथ्स, रीजनिंग और जीए तीनों में ही एप्लीकेबल होता है, वो इज रिगार्डिंग एमसीक्यूज. लाइक हाउ मेनी एमसीक्यूज डिड यू प्रैक्टिस, लाइक सेट्स ऑफ एमसीक्यूज? So what I did, जो भी मतलब अभी तो there are a lot of like online sources where you can practice MCQs. So month like depends on what amount of time you have or something. Monthly भी मैं कभी कभी कर लेती थी, कभी वीकली भी कर लेते थे, एंड बाकी एट द एंड तो फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे आर इम्पोर्टेंट. मतलब I used to make sure that if I am doing a PDF, तो I will, after the second or third revision, I will attempt the MCQs to at least gauge the level of understanding that I have now. ओके ओके. एंड सौम्या जी, इज द नंबर इम्पोर्टेंट, या फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, मेरे को ये मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया और इतने एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस कर लिए, मतलब मेरे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जरूरी नहीं है मैं मतलब मैं 100 क्वेश्चन करूँ, 200 क्वेश्चन करूँ, नहीं. अगर इस क्वेश्चन भी कर लिए, अच्छे लेवल के कर लिए, अच्छी क्वालिटी अच्छी कर ली, सो दैट वुड सफाइस, आई गेस. Yeah, absolutely. सो क्वांटिटी की जगह आप क्वालिटी पे जाइए, बेशक कम कर लीजिए, बट उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आपका. और हाँ, रिवीजन के बाद ही प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना ऑफ कोर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे. ओके, सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट फेज 1. अब हम फेज 2 पे चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक पोर्शन ऑफ ईएसआई एंड एफएम फर्स्ट. ESI static portion not of much importance क्योंकि पूछा ही नहीं जा रहा है. It is all dynamic, all current affairs based, but still I prepared few things like GDP, inflation, balance of payments. All these are topics जिनका static portion, if you don't know, you will not be able to understand the current affairs well. So these are some core economic topics जिनका static portion you will have to like prepare at the very starting of your preparation, क्योंकि फिर आगे का नहीं आपको समझ में आएगा वरना. Other than that, FM तो of course it is mostly static and very scoring part of it. तो FM is one topic जहाँ के लिए I prepared my own notes before my first attempt. It also costed me some time in my first attempt, but it really helped me in my second attempt because static portion है, तो when it is done for your subsequent attempts. तो also because I felt कि FM थोड़ा ऐसा है कि if I have prepared my own notes, when I look at them, it will be easier for me to remember because it helps in descriptive also. Because अभी आपको you don't have to just remember, you have to recollect when you sit in the exam. So that was one portion where I prepared my own notes from the online sources that are available. ओके ओके. सो इज देयर एनी साइट यू रेफर, जैसे आरबीआई का साइट आपने कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर्स के नोट्स बनाए हो, या कुछ साइट्स आप बता सकते हो जो आपने रेफर किए हो? Sites, Investopedia now and then was one site, and other than that monthly compilations जो भी आते हैं ना, they cover pretty much RBI circulars, notifications वगैरह, at least till phase 2. इंटरव्यू के लिए तो you have to visit the website, but till phase 2 वो compilations can also suffice.
Also, मतलब Okay, if okay. if you have the time, it is always better to go for the website if you have the time. हम्म. हम्म So, is that a right strategy if I would say कि static portion का हम पूरा notes बना के रख सकते हैं, एक बार पढ़ लिया notes रख दिया, and then we can revise it when phase 2 comes, है ना? एग्जैक्टली और वो यस notes अभी बना के रख ले. See, I think this is नोट्स अभी बना के रख ले, क्योंकि फेज 1 और 2 के बीच में वी वॉन्ट गेट दैट मच टाइम कि हम नोट्स बनाने बैठे. हाँ सो नोट्स अभी एग्जैक्टली बना के रख, यू कैन रिवाइज इट. ऑल्सो करंट अफेयर का तो हमें डेली अपडेट करना ही पड़ेगा, हाँ इधर विद द हाँ or whatever you are reading, whatever you are referring to. Okay. यस सौम्या जी, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के बारे में थोड़ा सा बताइए. हाउ डिड यू प्रैक्टिस एंड ऑल? हाँ इंग्लिश डिस्क्रिप्ट सी फॉर essays and all the framing understanding you'll get if you're already practicing answer writing. If I राइट. talk about the essay, for Pressy, रीडिंग आनी चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, एंड यू हैव टू लाइक समरी नहीं निकालना है उसका, उसका जिस्ट निकालना है. ये है तो अ हम्म. टेक्निक विच आई यूज्ड वाज कि आई यूज्ड टू लुक एट हाउ मेनी पैराग्राफ्स, मतलब छोटे छोटे जो भी पैसेज दिया है छोटे छोटे उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लिया. देन आई यूज्ड टू लुक एट द वर्ड लिमिट विच इज अवेलेबल टू मी, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया. एंड देन फॉर एग्जाम्पल 4 लाइन का अगर मुझे उसमें 20 वर्ड्स निकालने हैं डिपेंडिंग अपॉन माई कैलकुलेशन, तो आई वुड गो फॉर दैट. मुझे उस चीज मतलब दिस इज समथिंग विच हैज वर्कड फॉर मी. आई नेवर लाइक डाइवर्ज फ्रॉम दिस अप्रोच इन प्रेसी, एंड इट हैज वर्कड वेल फॉर मी. टॉपिक हमेशा लिखना है प्रेसी में, क्योंकि मॉक्स जब मैं दिए थे मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, इन एवरी मॉक आई फॉरगॉट द प्रेसी, मतलब टाइटल देना भूल गई थी मैं. तो अपनी हम्म. टेबल पे ही आई लाइक बहुत बड़ा बड़ा मैंने लिख लिया था कि प्रेसी टाइटल. तो दैट लाइक मेड श्योर कि एग्जाम में ये नहीं हुआ मेरे साथ. तो एग्जाम में आई न्यू कि इसको टाइटल जरूर देना है, क्योंकि मैं भूल जाती थी. बिकॉज इंग्लिश ओके. अगेन, बिकॉज ESI FM पे आप इतना फोकस करते हो कि थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है, बट वो बिल्कुल भी नहीं करना है. इंग्लिश इज अ वेरी हम्म. स्कोरिंग पार्ट, एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए. आई थिंक ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, बाकी आरसी वही है. पैसेज तो डिफिकल्ट आ रहा है, मुझे तो डिफिकल्ट लगा था. पीपल सेड कि इट वाज इजी फेज 2 में, बट मुझे थोड़ा हम्म. डिफिकल्ट लगा था, मे बी बिकॉज वो एकदम एंड में आता है आरसी, व्हेन योर माइंड इज हम्म. कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड. तो लेकिन फिर भी इट वाज फाइन. तो बस अंडरस्टैंड, वो भी प्रैक्टिस है आई थिंक. वो इफ यू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, यू विल गेट इट. एंड अगेन इंग्लिश इज ऑल्सो, समथिंग. हाँ आई डू यू सेड थिंक न्यूज़पेपर? Yeah, it did. Editorials I used to read. I forgot about it actually. Yeah, so editorials I did read. Not like एग्जाम से बहुत ज्यादा पहले, क्योंकि उस टाइम इतना होता है यू डोंट वांट टू रियली इन्वेस्ट योर टाइम इनटू एडिटोरियल्स. लेकिन व्हेन यू हैव द टाइम, जैसे अभी टाइम है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, नाउ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इनटू एडिटोरियल्स. यू कैन हैव, एंड मतलब क्योंकि अभी आप 1 घंटा लगा रहे हो तो वो धीरे धीरे डिक्रीज होके बाद में 15 मिनट हो जाएगा, अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा है. क्योंकि एग्जाम में भी बहुत इजी लैंग्वेज के पैसेज नहीं आ रहे हैं. दे आर गिविंग यू डिफिकल्ट लाइक फाइनेंस, कोर फाइनेंस टॉपिक्स on which passage is given. So Hindu editorial or some other newspaper you used to follow? Phase 2 तक तो हिंदू ही किया था मैंने. Okay. And then for interview, business standard, because वहां पे थोड़ा it is important to have an understanding of a financial newspaper interview perspective okay. से. That's perfect. So reading newspaper, I think art of answer writing, I would say that would Yeah, art of answer writing. descriptive practice I would say it is a must. क्योंकि descriptive 200 out of 300 marks is descriptive, and Telegram will help me. Telegram पे there are a lot of channels, there are a lot of sources that are going to help you in descriptive. So please utilize them well. They are free of cost, they are available, and डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक आंसर तो लिखना ही है. Okay. That's a very important advice. So this is the time wherein you can build yourself on the editorial part, on the reading part, on the understanding part, at least ताकि आपको एग्जाम में जाके वो पूरा स्ट्रेंज ना लगे, समझ ही ना आए. ऐसा नहीं होना चाहिए. So this is the time when you can invest on reading and understanding the editorials. Maybe एग्जाम के पास नहीं टाइम मिलेगा आपको, and so right. Yeah. So let's now come to the interview part. So I'm sure your interview was good only, तो तभी selection भी हुआ है. But like how exactly were you feeling on the interview day?
Uh, exactly. So before entering the office, yes, I was nervous. I was anxious. Even in the waiting hall, I was nervous. But somehow I don't know. I was when I was waiting outside the interview hall, I was not nervous. I was very calm, very composed, and then I was called into the interview room. So the panel also made me feel very comfortable. They were very cordial, no grilling whatsoever. इस बार काफी सुनने में आ रहा था कि grill कर रहे हैं ये वो, but मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था. Okay. I entered chairman sir. I greeted chairman sir and other panel members. He asked me to sit. उसके बाद it took a natural course और ठीक ठाक हुआ था मतलब इंटरव्यू. अब मतलब मोस्ट ऑफ इट वाज गुड. देयर वर सम पार्ट्स जहां मुझे लग रहा था कि शायद कुछ इशू हो सकता है, बिकॉज इंटरव्यू स्पेशली आरबीआई इंटरव्यूज में यू कैन नेवर बी श्योर कि क्या देख रहे हैं वो, क्या जज कर रहे हैं. बट वो I maintained my eye contact. I was smiling throughout. Even when I didn't know an answer, I told them that, sorry, sir, I don't know, I'll read upon it. And that was my focus of I didn't want to focus on answering every question. I just wanted to maintain my calm and my composure. So yeah, that was it. Okay, so do you remember anything which was being asked in your interview? Any question? Yeah. Yeah, because it was not too long ago. I had my interview in the later half of November, so I can remember. So yeah. So the first question was by Chairman Sir only. He asked me, how would you define success of a person? ऐसा कुछ question ने पूछा था. So I took 5 to 10 seconds and I gave them an answer, and they were very happy with the answer. I think now when I look back, I think that it sort of made a good positive impression on them, and might have they might have made up their mind, because मुझे लगता है वो ना 5-10 मिनट में ही अपना mind makeup कर लेते हैं. फिर he then asked me that, are you a science student? Because I think by then he had not looked at my biodata. I said, yes sir, I am a science student. He said that, yes, you have answered like a science student. So that is how he tries to make you feel comfortable. फिर he asked me what is financial inclusion. फिर बस this was the only question, 2 questions that he asked. Then there was a lady member. She asked me about financial inclusion index, the different parameters, and one opinion based question on which parameter should we focus more. This was a question. Then one panel member also asked me, why are forex reserves required? How does RBI intervene in the foreign exchange market? Why does RBI intervene in and how does RBI do that? Uske baad, there were some questions on balance of payments, what is purchasing power parity. एक particular question था, I was not able to get it. Sir asked me कि what if the currency of a particular country is continuously depreciating? So I tried to give them some answer. They were also trying to lead me up to the answers. But maybe I was not able to give them a very satisfying answer, but they were very fine with it. Background की जो बात होती है, I feel कि because I did not have the background, they were probably उनको थोड़ा मतलब, even when I had a decent understanding of economics and finance, they were comfortable with it. For somebody who's coming from that background, they will be expecting much more. Because of course you have studied from, like when you have a degree in it, you've studied 3 years, 4 years, or 5 years, something, they are going to expect that much knowledge from you. So I think background वगैरह का ना, जब इंटरव्यू के लिए when you have the interview call letter, तब सोचना चाहिए. उसके पहले इतना नहीं. उसके पहले phase 1 phase 2 बहुत, especially phase 1 was a very big hurdle for me, क्योंकि the paper was so tough. I didn't really knew that whether or not I am going to clear it, but fortunately it worked. Okay, thank you. So basically the what I can understand from this is that conceptual knowledge is must. Without having a good base in your concepts, you cannot really get through the interview, at least. Maybe through the phase 1, but not the interview at least. So conceptual knowledge is very, very important. I would like to add one thing, just one thing. Yeah. So interview mein, I think another thing that might have worked well for me was that I was very crisp, very short, and very to the point to what they're asking. I didn't beat around the bush.
yes, because I think there was one member, he asked me about some index, and I just did not know about it. So I told him directly that, sir, I did not know about it. And even for the other questions, I gave them very crisp, very short, very like बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं, just to the point answers what they're asking. So just give them what they want, and they'll be happy to award you with good marks. That's it. So keeping it to the point, right? Yes. That's a very strategy you all can follow, keeping it to the point. Okay. So one thing, Soumya ji, I wanted to ask you, actually, बहुत सारे students का ये doubt है, if they are freshers, can they clear this exam? If they're freshers, if they've not appeared in any banking exam, or maybe they have appeared in any some other banking exams, is RBI grade B possible to crack? Like, if I am sitting here, then of course it is. Because ultimately, what is going to get you through this exam is your hard work, your determination, your willpower. Because yes, I'm sitting here today, but it has not been easy. It has never been easy. Every day you follow the same routine. You get up, you do the current affairs, you do the schemes, you do the, and you go to descriptive practice, फिर quant, फिर reasoning, फिर शाम होते होते revision एक. तो and you follow the same routine for months, for years. So it's never easy, but when you want to prepare for these exams, you sign up for it. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी श्योर कि हाँ आपको ये करना है, तभी आपके अंदर से वो आएगा. अदरवाइज इफ यू आर लाइक, अगर आपका मोटिव कुछ और है कि बस ऐसे ही आ गए हैं या देख लेते हैं, तो वो विल पावर ही नहीं आएगी अंदर से. So true. And this leads me to the another question, that what you used to do जब आपको कभी demotivated feel होता था, या maybe today you don't want to study, आज mood नहीं है, आज मन नहीं है. So उस टाइम पे जब लो मोमेंट्स होते हैं, उस टाइम पे आप क्या प्रैक्टिस करते थे? उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत फोन यूज कर लिया, सोशल मीडिया देख लिया, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं. आई वाज नॉट वेरी एंगेज्ड विद सोशल मीडिया, बट हाँ, एवरी नाउ एंड देन आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद माय parents. With I have a brother, I have a younger brother. I used to just talk to him whenever I felt low. I also have small kids in my at my home, so I used to play with them. They're very like 1.5 year old. So unke sath, when you just engage with them, you really forget about your own problems and issues. So just find out something, because that is also important. Rose when you're following that routine, तो of course it becomes a little exhausting after a point, especially जब marks नहीं आ रहे हैं, mocks में marks नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो वो थोड़ा डिमोटिवेटिव होता है. ट्रू. सो कीप अ बैलेंस, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होना है, बिकॉज ऑफ then you won't be able to continue the same thing you're doing, जो आपको पूरा एक साल तक करना है, I guess. So you need to keep a balance. That's what Soumya ji is suggesting, and I also would suggest. Anything you want to say to the people who will listen to you? Maybe, of course, हो सकता है कि कुछ banking exam की तैयारी कर रहे हो. There are people who are actually appearing from years, since years they're appearing for banking exams. They're trying to crack कि किसी एग्जाम में हो जाए, है ना? So there are actually a lot of people. तो उनके लिए, और स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी जो 2024 लिखने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? Just don't give up, maybe, because at the end of the day, yes, it feels bad when you are not able to get through. I know that feeling. But then that is life. You win some, you lose some, and just chin up. रोना है थोड़ा, रो लो, कोई नहीं, just vent it out. And because there is no option, when you have decided to prepare for a government examination, you knew that it's not going to come easy. बाकी one day, आज नहीं तो कल, the luck will favor you. If you are working hard, it will favor you. मतलब अगर आपकी किस्मत भी है ना, और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो it's of no use. For luck to be on your side, you'll have to work hard. You'll have to have that much patience, that much perseverance to just keep sailing through. तो सौम्या जी, आई थिंक प्रीटी मच हमने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया है. इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज लेफ्ट, या आप कुछ भी बताना चाहें अपने पूरे जर्नी के एक्सपीरियंस से, आप बता सकते हैं. अदरवाइज अब हम रैप अप करेंगे. कुछ भी आपको ऐड करना हो अपनी पूरी जर्नी से, एनीथिंग जो आपको बताना हो.
जर्नी व्हाट आई वुड से दैट ठीक है, स्टडीज हैं, एकेडमिक्स हैं, वो सब है, बट all of it also, I think it has changed me or had some impact on me as a person also, because when you gain knowledge, your personality changes. आप चीजें समझते हो अपने आसपास क्या हो रही है. आई हैव बीन, एज आई सेड, आई हैव बीन अ लाइफ साइंस स्टूडेंट, तो वो थोड़ा डिसिपल अलग हो जाता है. When I'm reading about economics, when I'm reading about social issues, I'm understanding RBI क्या कर रहा है, how is it going to impact on the economy, how is it going to impact on the society. So your perspective widens, especially as a science student, because as a science student आप more or less you have been books के आसपास रहे हो, वही चीजें आपने पढ़ी हैं. तो ये चीजें when I studied, it gave me a different perspective to look at things, and uh, I think somehow enhanced my personality also. So yeah, that is it. I think that's really amazing point you just mentioned, that it changes your entire personality. This is not just an exam. You are into it, and you're so much into it that it is changing you from inside. It is Exactly. changing Yes. the perspective you're looking at. You're looking at the world. So overall, आपका perspective ही change हो जाता है. So that's really really well said. So with this, I think मैं थोड़ा सा एक बार summarize कर देती हूँ पूरे हमारे इस interview को, so that थोड़ा easy हो जाए for you people to understand. So सौम्या जी की तरफ से हमें हमेशा जो है अपना सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करना चाहिए. दिस इज व्हाट शी मेंशन्ड. सारे ही सब्जेक्ट्स का बेसिक की क्लैरिटी होनी चाहिए. फैक्ट्स करने हैं डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम when it comes to current affairs, when it comes to ASI and FM, आपको conceptual knowledge होनी चाहिए. It'll be helpful in your prelims, mains, as well as in your interview. And revision is must. 3 to 4 times आपको minimum revision करना है. बिना revision के नहीं हो पाएगा. और रही बात MCQ की, तो जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने हैं, बट मेक श्योर आप कुछ क्वालिटी MCQs प्रैक्टिस कीजिए एंड डू एनालाइज देम. कहाँ पर आप वीक हैं, आई गेस सौम्या जी, एम आई राइट? कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, वीकनेस क्या है, गलती कहाँ हुई है. कई बार हम सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं एंड देन वी रियलाइज इट लेटर कि ये तो मुझे आता था, है ना. सो वी डू दैट एज वेल. सो ट्राई नॉट टू डू दैट, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा. About writing, you need to learn art of answer writing. थोड़ा time management भी ध्यान रखना है, and this is in the context of prelims and mains both. And about interview, you need to be calm. You need to be honest. I think honesty is very yeah. And you need to be to the point. जो वो पूछ रहे हैं सिर्फ उतना ही आपको बताना है. Stay calm, stay to the point, and you'll get through it. So that was, I think, pretty much we have discussed. Thank you so much, Soumya ji. It was wonderful to have this conversation with you. And again, many congratulations to you. Thank you. Thank you so much, ma'am.